इनवाइट करूंगा मिस राधिका कालिया, मैनेजिंग डायरेक्टर एलएलजी इंडिया। मैडम प्लीज कम एंड थैंक यू सो मच। ईपीआर रिजीम आज से नहीं 2008 से डिस्कशन हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, और 2012 में नया रूल आया था, तो इवॉल्व होते होते 2016 हो गया, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने कभी 2012 का रूल पढ़ा ही नहीं ई वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट में। उनको लगा कि टारगेट ही नहीं है तो टारगेट करना ही नहीं है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनी। जब 2016 में सरकार ने टारगेट दे दिए तो उसके बाद उनको लगा ये तो बहुत खर्चा होगा, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस बढ़ गई है उनकी। अब रूल पोल्यूटर्स पे सबको हमें मालूम है, विपिन सर ने भी बताया आज सुबह अपने की नोट उसमें कि रिस्पॉन्सिबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट होनी चाहिए ईपीआर के लिए। और जब तक कलेक्शन, रिसीविंग और सॉर्टिंग एंड स्टोरिंग नहीं होगी तो रिसाइकल भी नहीं हो पाएगा। और 2016 का जो रूल था वो टिपिकली कलेक्शन के ऊपर था, और 2022 का रिसाइक्लेबिलिटी के ऊपर आ गया। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर पीआरओ या डब्ल्यूएमएज या डिसमेंटलर्स सिस्टम में स्टेक होल्डर्स नहीं होंगे तो माल कहाँ से आएगा? ठीक है, रिसाइकलर उठाएगा, रिसाइकलर मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे और उसको लेके आके हम लोग रिसाइकल करेंगे। बट it is beyond bringing material back. It is about tracking, tracing, and then seeing whether the material is right for resource recovery. That is a larger challenge. So typically क्या कहते हैं इसमें, material flow, money flow और information flow, ये 3 typical important aspects हैं जो विपिन सर ने भी सुबह बताया सबको। मटेरियल फ्लो कहाँ से आ रहा है और उसको कैसे हम सेग्रीगेट करके काम कर रहे हैं, वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पैसा नहीं होगा तो कोई भी फ्लो काम ही नहीं करेगी। अगर वैल्यू प्रोपोजिशन हम इनफॉर्मल सेक्टर को नहीं देंगे, जो उनकी एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी बड़ी, अगर हम उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो वो मटेरियल फ्लो आपके सिस्टम में और रिसोर्स रिकवरी के अंदर नहीं आ पाएगा। We have worked since 2017 very closely with informal sector in the market, trying to induce them to become formalized. हम लोगों ने कोई 200 इनफॉर्मल लोगों के साथ, कबाड़ी वालों के साथ मटेरियल खरीद के रिसाइकलर्स के यहाँ भेजा है। और जिस तरीके से रिवर्स लॉजिस्टिक्स है, जो ये स्लाइड भी बता रही है, रिवर्स लॉजिस्टिक्स is a value added process that addresses how a company receives items back from customers. That has to be thought through. Producers and brand owners, when they put to market, they do have a customer service and they do give warranties and guarantees to their products to bring back and repair them. But after a certain period, it is very, very expensive for them to maintain. I think so. Slides अपने आप आगे जा रहे हैं, ये पीछे वाली slide पे थी मैं। हाँ, so I'm not moving it, it is moving on its own. So I'm sorry, there is something happening. I can have a slide. So I just would re-emphasize on this reverse logistics। हम लोग जो काम करते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट को मार्केट में भी उतारते हैं एडवर्टाइजमेंट करके और उसको पुट टू मार्केट करते हैं। जब एंड यूजर मटेरियल खरीद लेता है, उसके बाद उसकी जितनी भी आफ्टर मार्केट सर्विसेज हैं उसका इतना अपडेट नहीं रहता। बट आई फील दैट आई हैव ऑल्सो वर्कड इन अ प्रोड्यूसर एंड producer knows whom he is selling to. He knows where the product has been sold off to, because they are your repeat customers. If they are your repeat customers and you have emphasized so much in your advertisement, it is our duty to get it back. And then check where the end users, like this economies of scales have worked in developed markets. The collection scheme over here, we have another challenge, जैसे सर ने भी बताया, बड़े इमोशनल और बड़ा अच्छा लगा मुझे समीर सर का प्रेजेंटेशन, जिसमें वो कह रहे हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम मी, सस्टेनेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम मी। इट्स अ वेरी वेल रिलेटेड। सो कंज्यूमर बिहेवियर हमारे इंडिया में चेंज नहीं हो रहा, हम कबाड़ी वाला को अभी भी बेच रहे हैं। बट इन अदर कंट्रीज लाइक इन जापान, यू हैव टू पे अ फीस टू get your material collected from home. In France, there is an advanced recycling fees. So that there are different modules
and modules where you can adopt in bringing back the product. The best way is that the OEMs have to have a closer um, uh, fist on their dealers and retailers, how they're selling in the market. I understand India is very price competitive. यहाँ पे बहुत competition है, बहुत brand owners हैं, और डीलर रिटेलर्स को बेस्ट लगता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में बेच दें ताकि वो मटेरियल उनका रियल जो जहाँ पे पुराना माल रखा है वो जगह खाली हो जाए, तो वो शाम तक बेच देते हैं. तो हम लोगों ने क्या किया है, हमने वो नीड समझ के एक अपनी केस स्टडी बनाई, और पहले काम शुरू करने से पहले हमने कैंटर्स चलाए सिटीज़ के अंदर, और मटेरियल हम लोग खरीदते थे एंड यूजर से. दिस इज टिपिकली फॉर ई वेस्ट एंड प्लास्टिक, बट इन ई वेस्ट वी स्टार्टेड बाइंग मटेरियल फ्रॉम एंड यूजर्स, and then we brought it to our collection centers. From there we sent to the recyclers. This is a very expensive proposition, because when we buy and then we sell, and for the producer it is a cost. So this costing is equally as expensive when you put to market. So we have to actually put down a framework, an action plan. That's why EPR has come into being. Action plan will be still required by the producers to think how you are actually putting the products into the market, tracking and tracing it and bringing it back. Then only the material recovery would happen. Else we will get all sorts of scrap which cannot be sorted well. Well, we've done a lot of awareness. हमने बहुत awareness करी है, लोगों को बताया क्यों आपको product वापस देना है, क्योंकि this is hazardous. So all of us have spoken about this. So our efforts have been on collections. Our effort has been on creating, channelizing recyclers across the country, working on a hub and spoke model, creating a take back portal, and also doing a lot of awareness programs across the country. इन awareness programs से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड यूजर इतना इंथ्यूज नहीं होता जब तक उसको वैल्यू प्रोपोजिशन ना मिले. बट दिस सप्लाई चेन कैन ओनली वर्क वेल, and we have worked this out in Delhi NCR region, where we had deployed a lot of people to go out and outreach to dealers, retailers, to outreach service repair shops for tires and bring back the material. We have worked on the costing, and however the costing is pretty huge, because we also have to deploy a lot of people, where either the producer would put their employees in play, or they would require people like us to go out in the market to bring back the products, and then of course for recycling, storing. So this is a reverse mechanics which we have brought in a lot of expertise into, being by not only having people but also processes and technology in play. The producers can also do this, but collection becomes a very pertinent and important aspect, even if the rule talks about recyclability and EPR certificates. There's a lot to go about it, and we have all spoken quite a bit. We can have further discussions over lunch. I would just skip that, and we are focusing on sustainability by empowering a lot of people. So we are also contributing to the sustainability goals. 6 of them are listed here.